Dear honored delegates and respected O.P. Khorwal sir and Sri Subhash Gupta ji, both are consultant and expert on RTI Act, and they will discuss and make a program interact for both of you, for all of you, on RTI Act. Before I call upon say Khorwal Sahib to come here, let us honor him with Mr. Bachi. Let us honor him. And now let us honor Sri Subhash Gupta ji. Thank you so much, sir. And now I will request Sri Khorwal sir to come upon and the podium and take over the. Good morning to everyone. First of all, let me thanks NMA for inviting me and giving me an opportunity to share some of my views on the RTI Act 2000. I think I was there in the morning, and most of the things have already been spoken for RTI as well as for the POSH by the earlier speakers. And I must thank all of you that you are here for this very, very important program. And like Mr. Mitra has said and Mr. Singh has mentioned about two things. One was that about RTI Act, that RTI Act has got two things only. That's the right and the information. And the POSH, when Mr. Rahulji was speaking, he mentioned that more than 50% are female and there should be male, more male for the POSH program. But I think both the programs are such programs that both are important to everyone, whether it's a male, irrespective of any gender. And these are the only two acts which are applicable to us. I don't agree with the speaker that not partly applicable to the private sector or partly applicable to the government sector. But I must thank NMA for selecting these two topics, and both the topics are equally important to both public and private, as well as these are the only act in India. Those are applicable to all the citizens of India. No other act you will find that is applicable to the all citizens. Since I have been given the responsibility of the RTI Act, I will share about the RTI Act 2005 and
in the morning somebody said that RTI Act is not very, this thing applicable to the private sector. But I must, and I will share with you that it is equally important for the private sector and how it is applicable. Because the private sector over here is said it is from the corporate or from the industries. So it is applicable to them also. How it is applicable? And it is not only that they are information seekers, they are also information provider in some countries, but not in all the cases. Before I go to all the point, because whether I should speak about the genesis of the RTI Act or not, though it has been given, but the time is very short. Like Mr. Lottie said, that's very inadequate time for both the programs. But how many people see why the RTI Act was required? Can anybody see why there is a need for the RTI Act? Well, I generally have more interactive sort of thing. Why there was a need? Whether there was no provision in the Constitution for obtaining of the information? Because it is the money that belongs to the citizen, and citizen has also right to inquire where the money is going on. And I think there is no other law that provides information to the citizen. Yeah. Sorry. Anybody else? How many are from the legal side? Nobody. How many have understood, know about the Article 19? I think I have, you were there in my earlier program also, not here in scope here. You know, Article 19, there is already a provision in the Constitution that there can be freedom of speech. And I must say that why this spark, right to information spark, because of the UP only. Today, because I am in UP, just Rajnath, are you aware of Rajnath? Yes. That who was at the time is the minister, and he wanted some information in 1970, around 1971 and 1972, about the government. And he said that under Article 19, I have a right to know how the government is functioning, like Mr. Nuisance was mentioning. And from there it started. Though it was started long back. There is a Supreme Court decision in case of Bengal Cricket Club and here. But the genesis started from there. Then the people started again and again, then why should not we have a right to information act in the policy? But the only thing which I wanted to share with you that you must know is somebody asked you कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आर्टिकल 19 के अंदर जो है what a provision for the freedom of speech and freedom of information. Under that you can also seek the information. But the only problem of that constitution under that article was that what information we should give, what information we should not. अगर आपको याद हो 2000 because of the information related to the female also, and in 1920 or 21 there was a Supreme Court decision that though privacy is not the absolute right, but it is also not less than the absolute right. So privacy is also important. तो क्या देना है क्या नहीं देना, that was not clear in the constitution. That is why RTI Act came कि भैया इसके अंदर clarity लाओ कि RTI Act के अंदर जो आपका right है, information का right क्या है और क्या information है जो आप ले सकते हैं, क्या information है जो आप दे सकते हैं. So therefore this act came and this act classifies that the areas or that the type of information which you cannot share. अगर कोई
आपसे पूछे आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आप क्यों बताएंगे? आपके एम्प्लॉयर से पूछिए कि आपके बच्चे, सपोज करो आपके स्कूल की फीस रियम्बर्स करती है कंपनी, आपका सारा बायोडाटा, किसी भी एम्प्लॉय का सारा बायोडाटा कंपनी के पास है। एंड इफ यू आर नॉट ए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयर से पूछिए कि भैया मुझे इसके सारी इंफॉर्मेशन दीजिए कि इनका बच्चा कहाँ पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, क्या करता है, या उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, वो इंफॉर्मेशन उनके पास है, क्या आप दोगे? क्या वो एम्प्लॉयर आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा? तो करेगा या नहीं करेगा, वो क्लैरिफाई करता है आगे कि क्यों देगा, क्यों नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार हम बोलते थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन है तो मुझे सारा राइट है कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन किसी की ले सकता। तो प्रॉब्लम इस कंट्री के अंदर क्या है कि इस एक्ट को आए हुए, मैं भी सिर्फ राइट की बात कर रहा हूँ, कि 2005 में आया, 18 साल हो गए हैं, अभी तक लोगों को ना तो राइट का पता है ना इंफॉर्मेशन। आई डोंट वांट टू दिस थिंग इंटरैक्ट इन बिटवीन, बट 18 साल में ये आपका राइट है और आपको नहीं पता है। गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ किया कि भाई आपके पास सारा, और इंफॉर्मेशन इज पावर, और आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, बट यू आर नॉट गेटिंग। सो ना तो आपको राइट के बारे में पता है, और इंफॉर्मेशन चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को पता होना चाहिए कि एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है। अब क्या, अगर आप लोगों ने, जिन्होंने भी अगर RTI डील किया होगा, आप लोग बोलते हो यार मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन मिली नहीं। ये तो पब्लिक सेक्टर इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है यार, हम पैसे खराब करते हैं लेकिन कोई इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि आप इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है। तो अंडर RTI एक्ट एक सेक्शन 8 ऐसा डाल दिया है कि ये वाली इंफॉर्मेशन आप मांगेंगे तो ये आपको गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं, ये यहाँ जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी की बात आ गई तो उसी वक्त में पब्लिक अथॉरिटी की जो सिंह साहब बात कर रहे थे, बड़ा क्लियर केस है। इट इज नॉट ओनली ऑफ द क्रिप्को, इफको, क्रिप्को, फैक्ट, तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बोला कि भाई हम तो सोसाइटी, वी आर कवर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट, वी आर नॉट कवर्ड अंडर द RTI, वी आर नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी। फिर ये गए वहां तक, लेकिन केस वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया, उसमें दो पोर्शन आए। एक तो ये कि पब्लिक अथॉरिटी, कौन पब्लिक अथॉरिटी होती है, मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बैठे हों, अदरवाइज ये मैं नहीं करता, हो सकता है उन लोगों को इसके बारे में। पब्लिक अथॉरिटी कौन है? या तो वो फंडेड बाय द गवर्नमेंट, या मेड बाय द पार्लियामेंट, मेड बाय द लेजिस्लेशन, या फंडेड और मॉनिटर एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर एनजीओ भी कवर हो जाए। तो इसके अंदर क्या था कि जो इफको आज ये बता देते हैं कि मैक्सिमम जहाँ पे एडिक्वेट फंडिंग दिया हुआ है या सब्सटेंशियल फंडिंग दिया हुआ है वो भी पब्लिक अथॉरिटी है। इसके अंदर सब्सिडी बहुत दी हुई थी, अभी इन्होंने बोला नहीं है, 35% से ज्यादा सब्सिडी है इनके पास। दे आर गेटिंग मोर देन 30। एक केस के अंदर 35 है, एक केस के अंदर 41 है, एक केस के अंदर 33 है, जो 3 कंपनियां हैं। सेकेंडली, they are monitored by the government of India. There is a quota system of the fertilizers. They cannot sell to anybody, and the price is fixed by the government of India. That is why they are covered in the RTI. For your information, जैसे आप लोग तो यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल में आता हूँ दिल्ली से 62 के अंदर पेपर, बट ये जो बत्रा हॉस्पिटल है that is also a public authority. अब क्या है कि मोस्ट ऑफ दी जहां जहां पे भी अगर सब्सटेंशियली फिनांस में इन द फॉर्म ऑफ द लैंड, तो देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन केस ऑफ बत्रा हॉस्पिटल दैट वी आर पब्लिक अथॉरिटी, और अगर किसी पेशेंट को कोई अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दैट इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास RTI एक्ट है
तो या तो एक तो आपको राइट पता होना चाहिए, सेकेंडली इंफॉर्मेशन क्या है. So with this thing I little bit I will cover a few of the provision, 4-5 provision cover करूँगा जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि इंफॉर्मेशन कैसे मांगनी है. क्योंकि even you people are when you are out of the office, because during the office you are covered by the CBA rules of the company, but after the office hours you are a citizen of India, so you can also seek the information, right, as a citizen. And everybody has got a right to ask the information, right to do. Actual जरूरत है, I will not share a lot of I must have generally मैं appreciate करता हूँ अरुणा रॉय को, because she was the lady that for fighting for the right to information, right to in the case of Rajasthan. She did a lot of work. We see the movement, but time is very short. I will only share. I want to share very important thing about Mr. Gandhi. Mr. Gandhi, after the independence, he has very rightly said, a democracy requires accountability, and accountability requires transparency. And he also said कि अगर आप गवर्नमेंट से मांगेंगे, if you don't ask, you don't get it. And the RTI Act is nothing but this. In RTI Act, under section 6, you have to ask the information. Act is the main framework and the main objective is the accountability and transparency. That if you are a transparent in your function, why it is required? That you should be transparent in your function. अगर आप ट्रांसपेरेंट होंगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप एस्टेब्लिश हो जाएगी, राइट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट द पावर हैज बीन गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द राइट. सो इफ यू डोंट आस्क, यू डोंट गेट इट. Objective they have already shared. I will not share. That's basic. I will only touch one thing. Basically, the RTI Act gives you the power, gives the power to the citizen of India to access the information. पहले क्या होता था? पहले आपके पास एक्सेस ही नहीं, क्यों नहीं एक्सेस होती थी? अब डॉक्टर मित्रा ने मेंशन वर्ड किया था कि कॉन्फिडेंशियल चीज को but we have to control what is there because we are a commercial organization. But what is confidential? Can anybody define confidential? Can anybody define secrecy? KBG secrecy. Sir, with due regards to you, I think in my 40 years of my service, and I was all the time in very sensitive departments, whether it's a contract or World Banks, related or the corporates or the parliament questions and issues and VIP references, हमको ये बोल दिया जाता था ये कॉन्फिडेंशियल है. 2007 when I took over as a CPRO, I was, because I have never read, अगर मेरे बॉस ने बोल दिया इसको फायर प्रूफ एल्मिरा के अंदर रखनी है, जैसा हमको बताया था, हमने बोल दिया ये कॉन्फिडेंशियल फायर प्रूफ रखना है. और अगर आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन मांगने जाते थे, तो पहले क्या बोल रहे थे गवर्नमेंट ऑफिस में, अरे भाई ये कॉन्फिडेंशियल है. मैं आपको क्या एचआर डिपार्टमेंट तो दोनों जगह है. सपोज करो आपने एचआर डिपार्टमेंट के अंदर कभी आज से 15 साल पहले अपनी एप्लीकेशन फाइल की हो या आपने उनका परफॉर्मा भर के दिया हो, और अगर आपने एचआर डिपार्टमेंट से, प्राइवेट ऑफिसर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अगर आपने आपकी खुद की कि मैंने अप्लाई किया था, उस वक्त मैंने जो परफॉर्मा भरा था, मुझे उसकी कॉपी मेरे रेफरेंस के लिए चाहिए, तो उसमें भी ये लिखा आ जाएगा कि वी कैन नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज कॉन्फिडेंशियल. क्योंकि ये आपकी पर्सनल फाइल में लगी हुई है. भाई पर्सनल फाइल में हो सकती है,
जो चीज मैंने लिख के दी है वो कैसे आपके लिए कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, वो तो मेरी है। दैट वाज द बिकॉज, अगेन बिकॉज ऑफ द एक्ट। व्हाट एक्ट? आर यू अवेयर? दैट्स द ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1920। अब बिना पढ़े हम यहाँ एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है, उसमें कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेसी। लेकिन जब हमने आरटीआई देखा और जब उस एक्ट को पढ़ा तो पता लगा कि इस एक्ट के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी तो डिफाइन ऑफिसेस के लिए की ही नहीं गई है। दैट ओनली कवर्स ओनली 4 एरियाज, व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल एंड व्हाट इज सीक्रेट। दैट इज द सर्वे ऑफ इंडिया, दैट्स रिलेटेड टू द आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। So ultimately, under the shelter of this thing, we were not getting this. So RTI Act की इसलिए भी जरूरत थी कि लोगों का माइंडसेट कि भैया इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि हर एक चीज ही कॉन्फिडेंशियल है, हर एक चीज सीक्रेट, एंड यू मस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन। और अब आप लोगों को मिल भी देंगे, लाइक मिस्टर लाहौरी हैज मेंशन्ड that 97% information is being shared. I don't know what is that, but most of the time it's very, very important for the private sector. How most of you are from the PSUs or government also? PSUs, no? Because PSUs, we are a commercial, PSUs are a commercial organization. अब कोई भी अगर commercial information देगा या नहीं देगा, कैसे देना है, क्यों देना है, we will share during exhibitions. So it promotes transparency and basically it is a continuum of the correction. Even government also feel that you cannot remove the corrections. You can only contain it, reduce it. Right? So I will only share one or two points of the act which you are having RTI Act. You have to POSH. I don't know whether Right to Information Act is also there. Very good. It is there. You just, I don't say that you read the complete act. Complete act is not applicable to you. Only two portions are very, very important. One is the information. अगर आपका राइट इंफॉर्मेशन का है तो ये तो पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन है क्या। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इंफॉर्मेशन क्या है तो आप कैसे इंफॉर्मेशन पाओगे। तो इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। क्या? एनी मटेरियल। तो मटेरियल का मतलब क्या हुआ? क्या इंफॉर्मेशन है जो फिजिकल फॉर्म में है। अगर वो मटेरियल है तो इंफॉर्मेशन है एज पर द आरटीआई एक्ट। अगर वो मटेरियल फॉर्म में नहीं है तो इंफॉर्मेशन। What about digital? Digital form? It is in digital form. Digital is a, we will discuss digital is a information if it is in your office. अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेल पे आई है या आपके उस पे डिस्प्ले है, तो वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है दैट इज। अब इसमें क्या डिफरेंस है? हम लोग इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं, फिर हमको बोलते हैं कि भाई हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ईमेल, ओपिनियन। Records are in the physical form, available in all the offices. Documents physical form में है, चाहे वो डिजिटल है या फिजिकल फॉर्म में है। मीमोस, ईमेल अगर ऑफिशियल है, अगर आपकी पर्सनल ईमेल है दैट इज नॉट ऑफिशियल ईमेल। देन ओपिनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर देयर इज ए amendment also, there is a DOPT guidelines also on opinion and advice.
I don't know about your organization. Let's take a example of Mr. Silva sitting over here from IFCO. Or I know Mr. Mitra that he's an ex-GAIL. If somebody suppose he's from the GAIL and is a CPIO, and if I ask information that I want to know under the RTI applications, whether the GAIL is diversifying in the area of aerospace or in the power sector. I am asking the information from the GAIL. Now, suppose he is the CPIO, he has gone through all the papers and he has not found any of the information in the records. But he was also part of the board meeting where this was deliberated by some of the board members that why should not we have got a refineries, we have got petroleum products, why should not we have our own power stations, or why should not we have got here the resources we can diversify to the area of aerospace. Whether we will provide this information, that this was discussed in one of the board meeting, and this is the information, but nothing was there, or nothing was discussed, nothing was there in the records. What we will do? Whether we will provide this information that this was discussed in the board meeting, or we will say that there is no information. If it is documented and mentioned in the board agenda, it should be given. If it is documented, then it should be given. If it is documented, And why was the meeting? one is the board agenda, one is the in the minutes. That has been deliberated. But there is no mention in the minutes of the meeting I have said. What we will do? Neither in the board agenda. Neither in the board agenda, neither nor in the minutes. Whether it will be information or not. No. Because there is no records available. Similarly, if I will say, what is your opinion? What is your opinion about a particular thing, whether we should go ahead with this work or not? But it is not mentioned on the note sheet. But in other case, in the note sheet, he has proposed two alternatives. That whether we should go for this type of, suppose we want to buy material, we will say no, we should not go for the 600 tons, we should go by 400 tons, or we should go by the 800 tons machine. So what will be there? In the first case, if I have asked verbally his opinion, that is not an information. But on the note sheet, if he has mentioned, then it becomes part of the document. It is a documented information. So it will become a. So please remember, if something is not there, what like you have mentioned, if something is not documented or something is not there in the records, it is not a information वही है जिसका रिकॉर्ड आपके पास है। अगर कोई चीज नहीं है तो आप सीधा कह सकते हैं no such record available with us. Then orders, logbook, contract, reports, papers, samples. Even you can ask samples of construction में है. You can ask samples also, but only during the construction stage. If somebody asks that I want to check the, this the materials conditions, whether proper material has been used or not, or strengthening of this wall. So I want a sample of this wall, you will not get it. Because it will be destruction. But during the construction stage, if you will ask, you will get it.
but you have to pay for material cost. Now, I wanted to share how the private sectors are covered. Very, very important. Information of private body accessed by the public authority as per the existing laws. Then you are covered in the, I was just mentioning that you are also covered. हम लोगों की क्या होता है, I am ex NTPC, we have got lot of projects, and you know we have got lot of laborers also working, contractors, laborers and all these things. And now as per the labor laws and all these things that you have to deduct the amount of EPF and EHS. So if somebody asks the information that I want to know that how many daily basis workers are working at your project. Say, these people are from the government sector, you are from the private sector, you are the contractor. Maybe you are supplying or your subcontractor may be supplying the labor. And if I am the RTI applicant, I ask, she is the CPI, I will ask her, she will ask them to make this information has come. Then as per the law, because they have got a control, if their project is in, say, here in Dadri, UP Dadri, some power plant is there, and you are the subcontractor and your laborers are working, they have got a right to get the information because you are working over there in the premises of them. And as per the labor laws also, as per the labor laws, that until or unless these details are submitted to the finance department, bill will not get cleared. So, as per that, you will get information. Now, and one more thing, I also came across one case. What was that? When somebody asked when I was CPIO, the copy of the performance report or copy of the inspection reports, some materials inspection report. Then I said that I was as a CPIO of NTPC and the private sectors had carried out the inspection and they wanted a copy of that. It was available with us in our records. In that case, that information is of a third party. Like Mr. Mitra said, we should also share what is the third party. So under these circumstances, though information is available with me, but I will not share. I have to seek the consent of the third party whether this information can be shared. So again, you have come into the picture. You may like to share. Sometime what happens that you have given certificate somewhere and you wanted to know that this information should be given, then you can provide a consent. That okay, no problem, you provide this. Right? So under these circumstances, the private sectors are concerned, but they are not direct public authorities. They are public authorities in case substantial financing has been used. That's as per section 2H. This I have already shared. No problem. Public authority. Records, any document we have shared. Sir, Yeah. if the application 6, information that is beyond the record retention schedule of the company, although we are having quite other information, but it is below, I mean, it is older than the record retention schedule of the company, then are we liable to provide the information? Very good question. Very good question. Though record is there, records are available. Records are All these things in the. Then what is the use of your record retention schedule? If you are maintaining the records, then what is the use of your record retention schedule? As per the income tax law and the company, we are liable to keep record only for 8 years. But for our own personal records, There was one case, I will give you the example. There was one case, and at the time we were also not having adequate knowledge about the RTI. I think in 2008, and there was about
more than 400 RTI applications from one person. And there are about 75 second appeals in the CIC, Central Information Commission. So I had just became the CPIO and that was my first case. The information was related, records, detention schedule was available, information was related to the HR department, यहाँ पे बहुत सारे लोग HR department that So what happened, I called because it was related to the corporate, it was related to the vigilance, information related to the vigilance department, it was related to the CMP secretariat, it was related to the Farida projects and the Gandhi project. So one Sunday I called all the people before the hearing and I discussed it. I made all the points. Now the person had taken the VRS about 8 years back, 8 or 10 years back, and all the files were closed after full and final settlement. And as per the record retention schedule, that his file should be disposed of after the completion of 5 years from his or her separation. तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट सीआईसी के पास था, तो मैंने कहा सर ये जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ये इंफॉर्मेशन तो एज पर हमारे शेड्यूल के हिसाब से 5 साल के बाद हमें नहीं देनी थी और हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रोफेसर अंसारी बहुत टाइम, अगर आपको तो शायद मिल सकते, बिकॉज नाउ वी बोथ आर टेकिंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और हम लोग साथी होते हैं, ये जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने कहा फॉर्मल साहब आपके पास ये इतनी सारी फाइलें किसकी हैं? मैंने कहा सर इनकी है, मिस्टर अग्रवाल की। तो कहते आपने इसको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? तो जैसे मैंने कहा साहब अगर बॉस बोलेगा कभी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें देनी होगा, तो फिर तुम्हारे रिकॉर्ड डिटेंशन शेड्यूल की रिक्वायरमेंट। उसने कहा अगर रिकॉर्ड डिटेंशन शेड्यूल आपके पास है और अगर आपने इंफॉर्मेशन शेड्यूल के हिसाब से डिस्ट्रॉय नहीं किया है, देन इट इज ए इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद यू एंड योर। तो रिकॉर्ड डिटेंशन शेड्यूल का मतलब ये है कि भाई लोगों के जब आपके रिकॉर्ड्स का टाइम कंप्लीट हो जाए, गवर्नमेंट गाइडलाइंस है 2012, 2014 और अभी रिसेंटली 2019 या 20 के अंदर तो उन्होंने बकायदा बता दिया है, एक रिकॉर्ड डिटेंशन शेड्यूल का प्रोफार्मा बना दिया है कि कौन से रिकॉर्ड की क्या लाइफ है। तो वो करो अगर आपका रिकॉर्ड होता है तो। अगर आपने रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और आपके पास रिकॉर्ड की डिटेल्स हैं कि दिस इज द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हिच वी हैव डिस्ट्रॉयड, देन दे कैन नॉट आस्क दैट। So you are not facing any problem neither from CIC nor from any of the honorable. So with due respect to all of you, अगर आपके का रिकॉर्ड एक तो रिकॉर्ड डिटेंशन शेड्यूल होना चाहिए, though it is not the session for the records, but there is a government guidelines also. आपका अगर रिकॉर्ड डिटेंशन शेड्यूल है तो डिस्ट्रॉय करो, कोई नहीं बोलेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, कोई नहीं बोलेगा आपको कि रिकॉर्ड डिटेंशन शेड्यूल है सर, आप पता नहीं पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट में काम किए नहीं किए, कोई नहीं पूछेगा। हम लोगों ने तो इतना कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इतनी एवल्यूशन रिपोर्ट्स वगैरह, हम लोग क्या करते थे, डिसीजन आपको खुद लेना पड़ता था। हमने एक सिस्टम फॉलो किया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट की सिस्टम ऐसे है कि अगर आपको कोई चीज रिकॉर्ड परमानेंट रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना है, यू हैव टू टेक ए क्लियरेंस फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कभी नहीं आती। हमने चिट्ठी लिख दिया, विजिलेंस को बोल देते, विजिलेंस नहीं लेता। के गवर्नमेंट में जब रिव्यू कम से कम प्राइवेट सेक्टर में शायद ये इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग विजिलेंस कोई जवाब नहीं देता। अल्टीमेटली क्या किया, जगह भरती जा रही है, उस टाइम पे इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को तो शायद नहीं ध्यान हो, लेकिन अगर एक और प्रोजेक्ट का अगर एक डॉक्यूमेंट, और पहले क्या होता था कि बिड्स आ गई, अगर 15-20 बिडर्स हैं तो मतलब आधा ये वाला हिस्सा तो भर ही जाए, और ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट से जगह भर। और हुआ क्या कि 19
2000 के आसपास बाढ़ आई थी दिल्ली में। तो दिल्ली में बाढ़ आई और जो हमारा वी हैड शिफ्टेड फ्रॉम स्लीपर हाउस टू हेडफोन टावर ऑफ नैरो प्लेस, नीचे बेसमेंट था, बेसमेंट में सारे डॉक्यूमेंट खराब। हमने कहा जब ये डॉक्यूमेंट खराब हो गए, इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने उसके बाद 2-3 संडे लगाए, जितने डॉक्यूमेंट हमारे पास थे कि जिसका अवार्ड प्लेस हो गया है उसका आर्बिट्रेशन हो सकता है, जिसका अवार्ड प्लेस नहीं हो उसका क्या आर्बिट्रेशन होगा, तो वो रख लो, बाकी सब डिस्ट्रक्ट। एंड वी क्रिएटेड लॉट ऑफ स्पेस। अच्छा, उसके बाद भी अगर बॉस क्या बोलेगा, गवर्नमेंट ऑफिस में बॉस अगर कभी जरूरत पड़ेगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल, ही विल नॉट अप्रिशिएट दैट यू हैव डन ए गुड जॉब, दैट्स द प्रॉब्लम। सर, आई विद योर परमिशन, आपने 2-3 वर्ड्स इस्तेमाल किए कि मैंने गवर्नमेंट में काम किया है, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कभी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, या रिकॉर्ड कितना पुराना है, कितना रखे हम। तो सर ने बताया रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, उसको फॉलो करने का भी एक तरीका होता है, उसकी एक कमेटी होती है, उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसी तरह से रिकॉर्ड रीडिंग की भी एक कमेटी होती है, रिकॉर्ड रीड आउट भी होता है, फिर उसकी पेजिनेशन होती है, उसको रखा जाता है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल नहीं भी फॉलो किया और आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एन इवेंट व्हिच हैज हैपेंड 20 years before, then even when you have information, you may not give the information. Okay, if it is more than the event has taken place. That's a different situation. Actually, this act, with due regards to you, the act says different. That in most of the cases, what the act says, if you will see the act, even if the information is 20 years old, the information which is not absolute, that you can only not share, but the information which is not absolute, that has no relevance to that information, and that information needs to be shared. Only two: absolute information not to be shared, conditional. Now let's come to the point number record rights. I was a joint secretary in the government of Sir, India. can I finish during the panel discussion? Otherwise, I will not be able to finish. नहीं, टाइम ही बहुत कम है, because they have to have lunch. Now these are the rights. Rights have been given to you. With due respect, all citizens have right to inspect the work and document, take notes, extracts and certified copies. Information disclosures in the public interest. कई बार तो information नहीं है, जैसे information is related to the corruption, information is related to environment. अगर आप यहाँ पे अगर नया प्रोजेक्ट लग रहा है सामने, अगर वो लगता है कि जो फ्लू गैसेस आ रही हैं, those can be dangerous, then you can also go for and seek the information. या जो आपके जो फ्लू गैसेस हैं, अगर पॉइजनस गैसेस हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क द इंफॉर्मेशन। तो कई इंफॉर्मेशन कोका कोला के साथ लोगों को पता ही होगा, जब पता लगा कि पेस्टिसाइड्स है, बिकॉज यूके देयर इज अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन सीक द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ आल्सो, सो दैट इंफॉर्मेशन इवन द फॉर्मूला वाज शेयर। देन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक, यू कैन आल्सो आस्क by mail or by proxies and all. Then you take samples. This is all. मैं सर जो हमारा पैनल डिस्कशन होगा ना सब उसमें हम कवर करेंगे ये Section 4 is basically the proactive disclosures जो आप लोगों को disclose करनी है information. Most of the public sector undertakings या PSUs या government, it is suo motu disclosure under section 4(1)(b) is mandatory. और सब लोगों ने कर भी लिया होगा और मेरे ख्याल है पिछले 2 साल से transparency audit has also started and that is also audit of the proactive disclosure and very recent in Supreme Court has also given a decision that suo motu disclosure is mandatory by all the
सेक्शन 6 पे आ जाते हैं। नाउ सेक्शन 6 गांधी जी वाली बात, इफ यू डोंट आस्क यू विल डोंट गेट। सो दिस सेक्शन 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंफॉर्मेशन सीकर्स, राइट? So you are also information seeker, whether private or a public or a government, but you are as a citizen officer. Yes, you have to ask the information. Request in writing क्या है? Verbally नहीं मांगना, आपको RTI एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। यूपी के अंदर अगर आप डालोगे या जो आप यूपी वाले हैं तो यूपी में डालोगे, और अगर आप सेंट्रल के हैं तो PSUs है तो वहाँ पर सेंट्रल एज पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन। Earlier there was no limit, but now there is a limit of 500. हमें याद है कि एक बार मेरे पास जो मैक्सिमम RTI एप्लीकेशन आई है वो 32 पेज की है, कोलबा प्रोजेक्ट से आई थी, 32 पेज की है। So because I am also convener of the RTI steering committee scope where we take up the issues of all PhDs, then in about 7-8 years back we have taken up with all the PSUs and with the Central Information Commission and DOP. The officials were there, okay, we are having this problem. We had reflected about 5 issues. Out of 5 issues, they have covered only 1 issue. There are 2 issues, I will discuss another one issue. Now they have, in 2012, they have issued the guidelines that the maximum limit of the words shall be of 500. Language can be any language, any official language. और आपका जो भी ऑफिस है उसके हिसाब से आप लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन, बट इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन सपोज करो आप आगरा से या तेलंगाना से, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज 4 है, तेलुगु, मलयालम नहीं है मैम, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। So these are the 4 official languages. Person can write or seek information any language, लेकिन information suppose को उसने मांगी उर्दू में है, हिंदी में, तो आप क्या करोगे? उर्दू में ट्रांसलेट करोगे? या क्या करोगे? Official language. Any official language, anyone in the हैं? anyone in any of the official. Official language. You can receive the RTI application any of the official language, but information as in the material form, section 2 Act. तो अगर जैसे अगर हिंदी में है तो हिंदी में देनी है, अगर अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में देनी है, ठीक है? जो जैसी इंफॉर्मेशन जैसी है उसको वैसे की वैसे देनी है। हम लोगों ने बहुत पापड़ बेले हैं, हमारे प्रोजेक्ट बहुत सारी जगह था, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ट्रांसलेशन करवाने में लग जाता था, ट्रांसलेटर ही नहीं मिलते थे। अब जब हमें क्लैरिटी आई तब हमें CIC ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि इंफॉर्मेशन जैसी है वैसी है। यू हैव नॉट टू चेंज द स्टेट, उसका 2009 के अंदर देयर इज ए DOPT गाइडलाइन। Application to be made along with prescribed fees 10 rupees, cash, IPO, demand draft, banker checks and electronic form, no problem. Anybody from the यूपी में कौन कौन रहते हैं? जो लोग यूपी में रहते हैं अगर उनको इंफॉर्मेशन मांगनी है तो आपके लिए, अगर आपको यूपी गवर्नमेंट से मांगनी है, नॉट फ्रॉम द सेंटर बट द यूपी गवर्नमेंट, तो आपका जो स्टैम्प पेपर है और स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प फी इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, राइट? बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सेंटर। नो रीजन फॉर इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए आप पूछिए। अगर आपने पूछ लिया तो इसका सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, राइट? इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी, आप तो देंगे देन टू एनी पब्लिक अथॉरिटी। सो दीज आर द पावर हैज बीन गिवन टू द एप्लीकेंट। कितनी बड़ी पावर है जो कि हम लोगों को पता नहीं है। सपोज करो मैडम को इंफॉर्मेशन चाहिए, मैडम यूपी में रहती है, इनको पता नहीं है तो मुझे किसको देनी है? इनको इंफॉर्मेशन चाहिए DDA से,
दिल्ली में इन्होंने अप्लाई किया हुआ डीडीए की इंफॉर्मेशन के लिए, मैं किसको लिखूं, डीडीए के लिखूं या दिल्ली गवर्नमेंट को लिखूं? शी कैन राइट द इंफॉर्मेशन, इससे चाहिए। यू कैन ऑल्सो गिव इट टू होम, टू पोस्ट ऑफिस। आजकल जो आरटीआई एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं, अगर ये मैडम उनको लिखेंगी तो इनको क्या मिलेगा, दैट दे हैव टू फाइल ए आरटीआई एप्लीकेशन, उसको फिर स्पीड पोस्ट कराएंगे, स्पीड पोस्ट करवाने के लिए वहां जाएंगे जहाँ पे स्पीड पोस्ट होता है, उसका पैसा देंगे। अब क्या कर रहे हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट क्या करते हैं, उनको पैसा ही बच जाता है, वो सीधा जाके पोस्ट मास्टर को जमा करा देते हैं 10 रुपए के आरटीआई। अब आरटीआई जो पोस्ट ऑफिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेट इट टू द कंसर्न। So these are the cases which I have come to know कि कई cases के अंदर लोग यही कर रहे हैं। So under section 6 is for the information seeker and section 7 is for provider. What is section 7? सेक्शन 7 क्या है? सेक्शन 7 के अंदर आपको पब्लिक अथॉरिटी, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द और ऑब्लिगेशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। तो सेक्शन 7 में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर सेक्शन 7 में इंफॉर्मेशन देनी है तो क्या करना है, फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंडिया के किसी एक्ट में नहीं है कि टाइम बाउंड। दिस इज ओनली द आरटीआई एक्ट, जिसके अंदर विद इन 30 days यू हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, अदरवाइज देयर इज ए पेनल्टी, राइट? So within 30 days you have to provide the information. So please remember, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई मांगता है, अगर आपके पास टाइम लग रहा है तो काइंडली एटलीस्ट मेक ए इंटरव्यू टाइम so that you can save or escape from the penalties, right? Intimation for cost of providing the information. अगर सपोज करो आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, आपने जैसे रिकॉर्ड्स मांगे, भाई मुझे पिछले 10 साल के फ्रॉम 2013 से 2023 तक के कितने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए, उन सब की लेटर ऑफ अवार्ड की या एलओए की कॉपी चाहिए। तो उसके अंदर इन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई 2000 के करीब, तो आपको 2000 जो पेजेस हैं उस पेजेस के आरटीआई एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि आपको फी नहीं देनी है, आपको फी लेनी है एंड फी इज 2 रुपीज पर पेज। तो आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि 2000 पेजेस है, 2000 पेजेस के हिसाब से 2 रुपीज पर पेज से यू प्लीज डिपॉजिट 4000। जब 4000 आ जाएंगे जो 2012 का जो मैं अपडेट भी आपको साथ साथ करता जा रहा हूँ, 2012 में एक ऐड वो आ गया, एडिशन हुआ है। अगर आपको याद हो, बिहार का केस है, बिहार के केस के अंदर एक आदमी ने इंफॉर्मेशन मांगी 2006 के आसपास कि मुझे सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो वोटर लिस्ट है वो चाहिए, एंड दैट वाज इन टन्स एंड दैट वाज सप्लाइड इन द ट्रक एंड अल्टीमेटली दैट पर्सन वाज कॉट सेलिंग इट टू द कबाड़ी। आफ्टर दैट देयर वाज ए प्रॉब्लम कि क्या देना है क्या नहीं देना है, दैट इज ए फैक्ट दैट एंड आफ्टर दैट इट हैज बीन डिसाइडेड इन 2012 कि अगर आपका पोस्टल चार्जेस आर मोर देन 50 रुपीज, पहले क्या होता था कि पोस्टल चार्जेस चाहे 1 लाख रुपया हो चाहे 2 लाख रुपया, हमें बियर करना पड़ेगा 40%। अब 2012 में क्या आ गया कि अगर आपका 50,000 रुपये से ज्यादा है तो आप उनसे मांगे। तो नाउ यू कैन आस्क These days they ask in scanned versions also. They just ask if you can provide these. It's a bulky document. तो आप हमें ईमेल कर दीजिए, जैसे ना, तो जैसे अगर कोई बल्कि डॉक्यूमेंट होता है ना सर, जैसे मोर देन लाइक 200 पेजेस और 300, तो दे आस्क स्पेसिफिकली समटाइम्स कि आप ईमेल कर दो, तो हम पीडीएफ वर्जन जो है ना स्कैन ईमेल कर देते हैं। Why you will do the scan? You are from which organization? And we already have NBCC. It's available with us. We're not. There are two things. First time you said के हम उसको स्कैन करेंगे, अगर पीडीएफ में अवेलेबल है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो यू कैन सेंड इट, नो प्रॉब्लम। अगर बट यू हैव टू स्कैन इट फॉर दैट पार्टिकुलर, राइट? अगर कोई
इसका मतलब you are not there. If we will provide them in the short form, we can provide them in the short form, right? Then there is no issue. But you have not to store the information in the hard copies. It is not in the soft copy. You have not to convert into the soft. You have not to spend the manpower on that. Then I will come to the case of the Bandyopadhyay versus CIC. That again, that public sector is a commercial organization. They are not supposed to spend 75% of their productive work on such activities. Right? So, in case third party information, like जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट है या किसी की डिटेल्स है, EHS या EHF की डिटेल्स है, तो इस केस के अंदर बिकॉज CPRO will seek the information from private sector or from person, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स या अदर डिटेल्स, जैसे मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पूछनी पड़ती है थर्ड पार्टी से. इन दैट केस यू गेट another 10 days. So that information you can provide in 40 days instead of 30 days. Right? But please remember, Section 6 के अंदर हमने मांगना था, Section 7 में हमें देना है, लेकिन Section 7 में देने से पहले हमें बिगिनिंग में एक चीज सोचा था, why this act has come. This act has come because there was no clarity what is to be given, what is not to be given. So that has mentioned that what should not be given under Section. अगर वो इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 से आनी है तो आप बिल्कुल यूज करो. व्हाट आर देयर इन सेक्शन 8? लेट्स देखिए, PSU जो लोग PSU के या गवर्नेंस के हैं, देखिए हम लोग चैरिटी नहीं. अगर आपको याद हो कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, और खैर हम लोग तो बहुत पुराने PSUs थे, वाई दिस PSUs वर फॉर्म. PSUs वर फॉर्म अगर आप देखेंगे तो PSUs वर फॉर्म बिकॉज द प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैड रिफ्यूज्ड to bring up their organizations or the big organizations. That was the vision of that government at that time, that we should have these type of manufacturing organizations in the remote areas so that you can provide the labor jobs as well as to provide them the infrastructure can also be developed. Now that situation has changed. I think since 1980 or 1981, lot of collaborations and all have been taken place. Now, and there was no competitor to us. चाहे वो स्टील है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो पावर है, हम लोगों की कोई या पेट्रोलियम है, हम लोगों के कंपटीटर नहीं थे. हम PSU से गवर्नमेंट, अभी मुझे अभी तक याद है कि जब मेरे को टाटास का ऑर्डर अभी मिला, हम 4 चीज़ हमने मांगी थी. उन्होंने मांगा है कि भाई तुम्हारा कूलिंग वाटर टेम्परेचर कितना है, कितने मेगावाट की आपको टरबाइन चाहिए, उसके अंदर आपका प्रेशर कितना है, इनलेट एंड आउटलेट. दैट्स ऑल. अब क्या होता था, जब वर्ल्ड बैंक के साथ फंडिंग शुरू हुआ 1982 में, और जब हमने डॉक्यूमेंट बनाया फर्स्ट टाइम, जब हमने इंटरनेशनल बिडिंग किया, एट द टाइम आई वाज नॉट इन NTPC, आई वाज विद BHL हरिद्वार, आपका यूपी. तो उस टाइम पे हम लोगों को इतना डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ा और इतने डॉक्यूमेंट्स हमने बना के उनको दिए. तो वो जो डॉक्यूमेंट बने थे, तो उस टाइम से भी कंपटीशन शुरू हो गया था, क्योंकि कंपटीशन किनके थ्रू हो रहा था, फॉरेन कंट्रीज. दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड. आज सारे PSU की ये कंडीशन है कि सबके कंपटीटर्स. अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, आप यही ले लीजिए, आप पावर से ले लीजिए, हाइट पे आपके अगर आपका पावर से रिलेटेड से ले लीजिए. अब कोई यहाँ पे पावर प्लेट लगा रहा है, किसी ने मैसेज मांगी, आपकी गवर्नमेंट रिपोर्ट दे दी.
मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट दूँ तो पहली बार सोचूंगा कि मेरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो मांग रहा है कहीं उसको बेच तो नहीं देगा, कोई इसका कमर्शियल यूज तो नहीं है, या कोई इसका मिस यूज तो नहीं है, कहीं ये रिलायंस को तो नहीं दे रहा, कहीं ये जेपी को तो नहीं दे रहा है, कहीं और कोई जो सप्लायर है उसको तो नहीं दे रहा है। आपको कम से कम टोरंटो है, कितना 50 वो है कंपटीटर्स हैं। सो यू आर नाउ ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, so you have to take your own interest. अब उस इंटरेस्ट के लिए there is a provision under the RTI Act। कि ऐसा नहीं कि जो भी मांगे आप दे दो। अब बहुत आर्टिकल 12 के बारे में उसने क्या बोलते हैं डॉक्टर मित्रा ने आपको मेंशन किया। आर्टिकल 12 क्या रहता है? Why you are public authority? Why you are public authority? Because you are covered under Article 12 as a state। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और उससे पहले PSUs फॉर्म हो चुकी थी, अगर आपको याद हो, जैसे DBC है, HSS हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, फैक्ट है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पहले PSU ऑयल बहुत सारी बन चुकी थी। How they are going to function, whom they are going to report. So what they have done, they have given the powers or the status to these PSUs equivalent to the state. So आप लोगों के लिए सेक्शन 81A, who was there at लेह में थे शायद आप में से या लखनऊ में, तो वहाँ पे भी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, ही मेंशन कि भैया जो मिस्टर कोरवाल ने स्कोप के अंदर 81A के अंदर बोला है सारी इंफॉर्मेशन आप मना कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट वी एग्री। अंडर सेक्शन 81A द सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एंड द साइंटिफिक और द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन देने से अगर आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है, आपकी ब्रांड इमेज इफेक्ट करती है, तो क्या आपका इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट नहीं करेगा उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन उसको मिसयूज किया जा रहा है, तो अंडर दैट, अंडर सेक्शन 81A यू कैन रिफ्यूज दैट। पिछले 2 साल पहले तक आर्टिकल 12 के बारे में हम नहीं बात करते थे, लेकिन 4-5 साल से हम आर्टिकल 12 के और 81A की सब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप ये अंडर सम सर्कमस्टांसेस यूज कर सकते हैं। अगेन वो हम लोगों ने यूज किया था 81A। प्रिया करके एक सोशल रिफॉर्मर थी एंड शी आस्क्ड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनटीपीसी रिगार्डिंग दैट विष्णु घाट और प्रोजेक्ट जो हमारा क्लोज हो गया था इसके अंदर, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो उसमें स्टेट भी कवर्ड था, यूपी या उत्तराखंड, उसमें हम एनटीपीसी भी कवर्ड था, उसके अंदर वहाँ के लोगों का जॉब भी कवर्ड था। अल्टीमेटली वी यूज्ड दैट सेक्शन 81A। दो CIC did not agree up to fully, but they say okay, she is a social reformer, तो एक काम करो आप उनको इंस्पेक्ट करो। But to be very frank, I must share with you people, she that lady, I don't know why that information was required, she didn't turn up for the inspection. So for the sake of, I can say, for the sake harassment also, some people are misusing this article. 81P, it is not applicable to us. 81C, not applicable to us. 81D, very, very. Any information that is a commercial information, अगर कोई भी आपकी कमर्शियल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट से भी हम कुछ चीज मांग लेते हैं। अगर सेक्शन 3 के अंदर अगर टू बी एक्सेस फ्रॉम द अंडर एनी ऑफ द लॉ आप मना कर सकते हैं अगर कोई मांगता है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके R&D रिपोर्ट्स हैं, आपके मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बिग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके
स्टडीज हैं, आपकी मैनुअल्स हैं, आपके HR मैनुअल्स हैं, मैं सारे मैनुअल्स को आई कवर्ड अंडर द इंटेलेक्चुअल। जिसके ऊपर मैंने पैसा खर्च किया है, आई कंसीडर इट माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यार जिसके ऊपर मैंने अपना पैसा खर्च किया, मैं दूसरे को क्यों दे दूँ? राइट, until or unless they share the profit out of that. अगर कितने लोगों को पता why I refuse feasibility report? एक feasibility report पार्क फ्रंट को बनाने में अराउंड 100 करोड़ के करीब का खर्चा आ रहा है, 8 करोड़ के करीब का खर्चा आ रहा है। अब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर लेगा तो उसको 8 करोड़ बच गया ना, उसमें से सिर्फ कुछ लैक्स करके ही वो यूज कर सकता है। तो मेरी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। जब मैं बिड करूंगा तो मैं तो उसमें 8 करोड़ ऐड करूंगा, लेकिन जब दूसरा मेरा कंपटीटर प्राइवेट पार्टी जिसने मेरे से इंफॉर्मेशन ली है उसके अंदर वो 8 करोड़ कम कर देगा, तो हु इज लूजर? आई एम। सो unless there is a third party, unless larger public interest, we will discuss larger public interest. बहुत important जो एब्सोल्यूट है, नो प्रॉब्लम, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? अगर ये रिलेटेड टू हेल्थ है, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है, देन और रिलेटेड टू करप्शन, अगर ये 3 चीज आती है तो आपको ये इंफॉर्मेशन मना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या मतलब हुआ? एक तो ट्रस्ट, जैसे मैंने आपकी पूछा था बच्चों की इंफॉर्मेशन जो आपका HR डिपार्टमेंट या आपका एम्प्लॉयर रखता है, दैट दे आर कीपिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, तो दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर। जैसे आप बिडर्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपकी बिडर की इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप उसको शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी फिड्यूशियरी रिलेशन है। अगर मैं भी बिडर हूँ, ये भी बिडर है, मैंने भी आप मेरी इंफॉर्मेशन इन्होंने ले ली, मांगी और इन्होंने इनको दे दी, एक म्हणजे पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगेन किसी की भी अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट टू बी शेयर। हमने एक सिंपल सा रूल बना रखा है कि अगर यू जस्ट हैव दिस थंब, अगर कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है आप दे दीजिए, अगर किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन उसको आप चेक कर लीजिए कि वेदर इट इज कवर्ड अंडर द प्राइवेसी और नॉट, इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है या नहीं। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस थिंग। आई मस्ट शेयर, उन्होंने मेंशन किया है गिरीश रामचंद्र देश पांडे का बहुत ही सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर उन्होंने अबाउट 15 इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी थी एंड ऑल द 15 इंफॉर्मेशन वर डिनाइड। उसमें आपकी इनकम टैक्स रिलेटेड, आपकी प्रमोशन रिलेटेड, ट्रांसफर ऑर्डर से रिलेटेड, आपके विजिलेंस इंक्वायरी से रिलेटेड, देयर वर अबाउट 15 इंफॉर्मेशन एंड more or less all the information were denied. Ultimately the issue came up के went to the Supreme Court। मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वही एक हुआ था कि हमारे हिसाब से दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन इन 2 कैटेगरी। वन इज द प्योरली पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपकी इनकम टैक्स डिटेल्स वगैरह वगैरह है, एक दूसरी आपकी सर्विस से रिलेटेड है तो सर्विस सीडीएम में आती है। तो अगर इसके अंदर कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पर्पस एग्जिस्ट है या सर्व करता है तो आप बता दीजिए। दे कैन नॉट एस्टेब्लिश एंड अल्टीमेटली under section we decided that it has to be established or it has to be proved, asserted by the applicant। हाँ मैडम। सर किसी की कैटेगरी के बारे में सपोज कोई पूछता है जैसे SC ST OBC and all that whether we can share this information। Names can not be shared but you can share the numbers। Numbers the
category like number of SC, ST, OBC and all. Yes, you can share That we how are- many, in your organizations, how many SCs are there, how many STs are there. You cannot share the names, but you can always share the details, total numbers, the total employee इतने हैं. And this information is available in your annual report. आप कौन सी कंपनी से? Yeah, GTS India. Indian India. So अगर आप GTS India Limited. हाँ EIL ना. Yeah. तो EIL तो public sector category है. If you will go to the annual report, the annual report of the organizations that covers the details of the employees, it will covers all these things. You can also give an answer to a party application there. The information sort is available under the portal of annual report on our website www.eil.nic.in. Go to that. But names you cannot share. There is a decision of the CIC with respect to the caste, with respect to the qualifications by Sharat in the CIC in case of real versus one person. Then अगर अब इसके ऊपर एक पर जे के ऊपर वो भी आ गया है लेटेस्ट आ रहा है डीपी तो that also has to be seen and now most of the information generally हम personal information किसी की share नहीं करते until or unless there is a law. Otherwise most of the time the personal information हम मानते हैं that is related to the promotion or that is related to the pay reasons or pay fixation or mostly are related to the matrimonial cases कि जहाँ पे they are going to decide about the compensations or जो भी आपका maintenance amount का decide करने के लिए. But if somebody is asking the total salary, that you cannot refuse. Because it is part of your section 4. That emoluments of a person is required to be shared as per proactive disclosures under the RTI Act. So that can be shared. Suppose करो अगर आपके PSUs के अंदर या कहीं प्राइवेट में अगर देना भी पड़ जाता है तो क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर ये अलाउड है that you have to share. So whenever you are going to share, please remember two things. You are not to share the PAN numbers and the items. These you have to hide. These two items have to be hide before sharing the information. Now she is occupying a position in the committee of state service post office. अभी इस applicant ने मांगा देखिए इसमें दो चीजें, एक तो आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कह के डिनाई भी कर सकते हैं. सेकेंडली जनरली क्या होता है कि CPI हैज टू सी दी कंसेंट ऑफ दी HR डिपार्टमेंट ऑल्सो कि किस सिचुएशन के अंदर इंफॉर्मेशन हो. अगर ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं शेयर करनी है, यू कैन ऑल्सो सी दी सेक्रेटरी कि भाई व्हाट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज सॉल्व विद दिस इंफॉर्मेशन. You get a right to I give one example. From Punjab, I used to get such type of information from one person and technical information also related to the projects. Then I asked this information, please give me justification why it is going to solve the larger public interest. Then he could not and he stopped asking me, filing the article. देखिए देयर आर टू थिंग्स. अगर मैं उस पे आ रहा हूँ सेक्शन 11 पे, दैट्स अ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन. सेक्शन 11 दैट इज अ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन. किसी की भी कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है आपने बिल्कुल, देयर आर टू थिंग्स. वन थिंग इज सेक्शन 8.j दैट्स अ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अदर इज द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन एज पर द सेक्शन 11. इफ यू आर using section 11, then you have to seek the consent of the third party. That within 10 days you have to seek the consent. In case you have not sought the consent of the third party and you have
given the reply that you have denied the information under section 11, then the CIC may penalize. If you have denied the information under section 8(1)(j), nobody is going to push. But we did seek the information from the employee and we disclosed our information to the applicant. So that's. If you have disclosed, there is no problem. But the employee cannot raise any objection that I didn't disclose my personal. Then the thing is that, please remember, regarding third party information, since you have raised this point and you have faced the problem, there is a High Court decision in 2012. The person has gone to the court that without my consent this information has been disclosed and he has sought the compensation for it. So after that we had started, at least in scope we had taken a view that until or unless we should receive the consent from the third party on such sensitive issues, we should not share. What you can do, you can keep on sending the reminders and send the reminder to the third party as well as to the applicant. That as per article section 11, you are seeking the consent of the third party and you are not able to get the consent. But if CPI is of the opinion that the permission is not a sensitive matter and she is already occupying a position in the public body. So Whatever may be, you have not to see all such situations. You have to see the information, you have to see that what is the opinion, what is the view, or what is the provision of the RTI Act under section 11. And under section 11, if you are exercising section 11, you have to see the event. So, it is very, very important that under section 11, third party information, like I have mentioned about the reports, there's inspection reports or the consent, then you have to seek the third party in writing February and 10 days have been given to seeking that information. And section 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 are not applicable to you. This is again an act which is very powerful for the citizen of India. Even if you are not satisfied with the decision of the Supreme Court, you can ask the information or you can file an appeal to the first appellate authority. That is as per section 19 of the Act. And under the same section 19, in case you are not still satisfied with the order of this thing, then you can file an RTI application or appeal, second appeal to the CIC or State Information Commission in case of the state. And one more this thing, as per Article 20, this is the only act that you have to provide the information within 30 days. In case you will not provide the information, there is a penalty at the rate of 250 rupees per day to the maximum 25. So I think he is waiting for me to close. So thank you very much. Though I am not satisfied, frankly speaking, I am not satisfied. I have brought lot of material for sharing with you, and I want you to discuss some important Supreme Court and High Court decisions also, CIC decisions also. But anyway, I am very thankful to you, and when there will be panel discussions, if any questions are there, you are most welcome. I will try my level best to satisfy or clarify your order. Thank you so much. We will have once again exclusive program on RTI. That will be, I think, most appropriate for us. And now I request Sri Subhash Gupta ji. He is a management consultant and an expert on legal matters, associated with many academic institutions and practicing also himself. So now I will request Gupta Sahab to address. Thank you, sir. Thank you. I have a limited topic to cover, and that is the recent amendments in the RTI Act. Mr. Korwal has covered the Act in a very, very thorough manner. He has given you the objectives of it and the situations where the information can be given and the information when it can be denied. So most aspects is covered.
rightly mentioned by me in the beginning that the RTI Act is for the purpose of bringing transparency in the system. And when we say transparency in the system, we are saying that the governance process is getting better and better. Because only when you hide, the governance is not seen. But when you become transparent, so we say it is an aspect of good governance that transparency is given. RTI Act 2005 is one of the best written laws on right to information in the world. One of the best. Working of the RTI Act has helped many policies of the government of India to come to your doorsteps and to avail the benefits. It is also a fact that the provisions of RTI have burdened public sector and many other officers, and most of the time information is asked for personal reasons, not for any societal reasons, or the information asked and obtained is then used in court cases. So that's also a fact. So there are some facets, okay, of it. I have been a government officer, and Mr. Korwal mentioned about the Archaeological Survey of India. I am their senior standing counsel of the Archaeological Survey of India. Now, Archaeological Survey of India, by its nature, and because it's a depository of large archival information, cannot share many information. I know as to what is there in the Gyanvapi case, because I am a part of the report which has been prepared and which is now with the Allahabad High Court. I cannot share. Nobody can ask me. I do not want to share what has gone in establishing in Ayodhya case that yes, it was the seat of Ramlala. I cannot. So if such information is asked, I will definitely deny that information. But most of the time, information is given. One more aspect about the Archaeological Survey of India. Now, Archaeological Survey of India is digitalizing entire information that it has, okay, which covers around 2 lakh manuscripts. Also information relating to all the monuments that it has in the country, and it is getting digitalized, for which a project is going on. 30% of the work has already been done in it, and once completed, the entire information which can be shared will be available to you free of cost for research purposes and for purposes of public information and awareness. So that is about the Archaeological Survey of India. Talking about the amendments of the RTI Act, okay, brought out by the 2019 Amendment Act. 6 things have changed, and many critics are saying that RTI has become RDI, the right to deny, the right to information to right to deny. Okay? That earlier you can ask for information and I am bound to give information, and information which I can give to the Parliament of India or to the state legislature, I must give that information to you. Now, I will say, as per the 2019 Act, no, I will not give this information to you because 2019 Act authorizes me not to give. So 6 things which have changed. Okay? Let us understand those.
One is the appointment of the CIC, Chief Information Commissioner, and the State Information Commissioner. Who had the power to appoint earlier, and who has the power now to appoint? Earlier, CIC was appointed by a committee consisting of the Prime Minister, leader of the opposition in the parliament, in the case of Chief CIC, and a nominee of the Prime Minister. In case of State CIC, Governor, Chief Minister, and his nominee. Okay? The amendment says that the central government will have the power. Okay? Therefore, the process of appointment of the CIC and the SCIC, State Chief Information Commissioner, and ICs moves from that high power committee to the central government. That is one change which is taking place. Okay? Right? Earlier, the tenure was 5 years, including the period which an IC has spent and if he becomes a CIC. That means an Information Commissioner has become Chief Information Commissioner, or SIC has become SCIC. Okay, so the total period was 5 years. Now it says for a tenure which can be decided by the central government. What does it mean? What does it mean? That the tenure is no longer of 5 years. The tenure is of a period which is decided by the central government. Both cases, okay, state as well as the state. This tenure can be increased, this tenure can be decreased. Earlier, the termination of CIC, okay, earlier the termination of CIC, okay, was not through inquiry or something. The termination was removal by president or by the governor after an inquiry has been conducted by the Supreme Court judge. Okay, not now. Not now. Okay, there is no provision about removal. Since the appointing authority is the central government, the removal can also be the central government. Secondly, when the term depends upon the central government, a person who is holding the position of the IC, CIC, SCIC may want to prolong his tenure, and therefore he may be serving, that is the criticism of the amendment, that he may be serving the government rather than the people, because he may be interested in ensuring the longevity of his tenure. Okay? So what has changed? The method of appointment has changed, the tenure has changed, okay, and the removal process has changed. Three important things in the life of an employee. If I say employee, because when I receive remuneration, I am an employee. Also, information, the office of the CIC is a statutory office. It's not a constitutional office. Election Commission is a constitutional office. Information Commission is a statutory body. Therefore, there is a difference when the constitutional authority is removed or ought to be removed or is supposed to be removed. There is a different process. In case of a statutory person, statutory body, it's a different person. Okay? Now, earlier, the status of the CIC was that of a Supreme Court judge. Not now. Because in the case of earlier status,
it was the CIC, the status was that of a Supreme Court judge. Okay, now since the appointment is done by the central government, that status gets diluted. Right? Why this has been brought? One of the suggestions while bringing this change was that any decision which is taken by the CIC is appellable and it is going to the court. Therefore, if a CIC is the status of the judge, Supreme Court judge, and the case is going to the High Court, then it is the decision of the Supreme Court judge which is getting challenged in a High Court, which is not a good situation. Hence, the change is desired. But the change dilutes the authority of the CIC to a large extent. Okay? So, this is third which is taking place. Now, these changes, section 8, 1J, you will speak and you have already spoken about that. Okay? Let us talk about something which is, what is the way forward, what we can do. We all know that right to information is an important information. It has empowered us. It has given vast powers in the hands of the public. It has placed many government officers in their right position because there is always a fear that this information can be asked. Okay? We also know, as on date, there are more than 3 lakh applications which are pending, which has not been answered. We also know that there are a lot of vacancies of the information commissioners, and both in the state as well as in the center. Okay. We also know that the vacancies are not filled in time for several reasons. Okay. Therefore, what is the way forward? How should we move forward? Today, we are in the process of what we call blockchain, what we call artificial information, what we call digitalization. These are new technologies. Therefore, the suggestions are, there are 4 suggestions how to move forward in an area which is very, very vital to the public. 1, open data ecosystem. Mr. Thorwal mentioned about that you have the open system, you have to transparency, you have to make certain information available on the website. The person should be in a position to visit the website and see that. So, first is open data ecosystem. Whatever data I have, if you can ask me on an application and you have to spend 10 rupees on that and 2 rupees per photocopy, per page per photocopy, if ultimately that information has to be given to you on asking, why not make that information available to you without asking? Why not make that information available to you without asking? Therefore, what I am doing when I am saying open data ecosystem, I am reducing the number of applications. I am reducing the number of applications because the information that you are asking for is available in the public domain. Okay, once the information is available in the public domain and the information is coming from an authentic source, I am also helping in a very, very large manner the legal environment, because an information which is coming from an authoritative source and is in open domain need not to be proved because it's already there. Therefore, I am reducing litigation, I am reducing cost to the person, I am reducing time, I am reducing the resources which are otherwise going to be used. So one suggestion is that this, and government is thinking on this. Open data ecosystem, place everything in the open data. Make it accessible. Okay, make it accessible by all. If you have to give it on asking, give it without asking. That is one.
Now second is, because we are having, when we say about digitalization, when we say about open ecosystem, when we say about placing things on the website, there is also a possibility of hacking it, making changes in it, okay, morphing it, and deep fake, all that you are now listening, okay, and experiencing. Therefore, the suggestion is that whatever you have in open data ecosystem, transform it into blockchain for data security, so that the breaking of it becomes difficult, okay, and it goes through a process of blockchain, therefore it becomes secure all the time, okay. Transparency index for authorities, how much transparent you are, there should be transparency index which is prepared, and information is sought, information is made available, and if you say that I am 98% transparent, it may be satisfactory as far as you are concerned, but you have to give reason why 2% opaqueness is there. Therefore, every organization will try to become transparent, transparency index, and then AI assisted responses. Artificial intelligence can be used so that the information that you are asking for can be once again assessed. So these are a few things which are there, which will help a way forward thinking. Government of India is already thinking on these lines. I have already given you one example of Archaeological Survey of India on huge cost and with very, very sophisticated data, very sophisticated equipment. We are digitalizing this information, not only for the present generation, but for future generations as well, because this information will then be in a time capsule which will be buried or kept in snow mines in Poland for 200 years and cannot be destroyed. Therefore, even after 200 years, you can dig out from those snow caves this information which will be available in a capsule, and you can use that information. So we are moving in that direction, and people are doing very good work. Section 8 amendment, J amendment, which is very important, right to deny. Okay, the information which you could earlier ask now can be denied under the Act, which is the greatest criticism of this Act. Perhaps it will be challenged. This is my view, that this will be challenged. Also, earlier the Act said, 2005 Act said, notwithstanding anything contained in any other Act for the time being enforced. That means the information has to be given to you, okay, notwithstanding anything. That means Official Secrets Act, and also the service conditions. Because many times in service conditions you are asked not to give information. So earlier 2005 Act said notwithstanding. That means notwithstanding the Official Secrets Act, notwithstanding the service conditions, the information has to be given. Now this bill, 2022 bill, Data Protection Bill, is trying to make changes in the RTI Act. Okay? Is trying to make changes, and there are several sections in it which will make some changes in it, and therefore information can be denied. Okay? There is a lot of criticism about these two, and these will be challenged to my mind, and right thinking, okay, people in the judiciary, right thinking people in the society will once again come forward and say, and we will have better systems. Okay? So these are a few things that I wanted to share with you about the recent changes in the information RTI. Okay? I could have continued. I have an arbitration starting at 2:30, and therefore I have to leave. Okay? That my
I thought that my session will be from 12 to 1, and I'll be sharing it with somebody from Indian Oil. So we'll together, okay, interact with each other, and then, okay. However, the gentleman has not come, and we got delayed in the morning. Therefore, I have to give it in a capsule form, what I have with me. Okay? Thank you very much. So, thank you, Gupta sir, for giving insight into the RTI Act. And now we will break for lunch. And Gupta sir, both of you are also requested along with our delegates and to join for the lunch. We are running little late. Thank Yes.